Welcome, everybody. I am your friend, insurance writer and trainer Pallab Kumar Manna, serving life insurance agents and team leaders for as long as 31 years. Today, we are going to make a discussion about debunking the myths or misconceptions about the agency profession. You all are welcome to this platform. Today's program is going to be held in English language mixed with a little bit of Hindi language. I am from Jeevan Prabaha Training Center. Jeevan Prabaha Training Center is serving life insurance agents for a long period. And due to this long experience, I have gathered so many things from you. And now I am going to discuss about the specific topic, that is debunking some myth about life insurance agency. So at first, let us consider the root of misconceptions. Why and what are the misconceptions? Insurance agency profession is a widely popular profession, but the young generation and the society has some misconceptions about this profession and about the method of working, what the insurance agents do for their professions. ये जो आज का ट्रेनिंग है ये इंग्लिश में ही होगा, थोड़ा थोड़ा हिंदी इसमें रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो एलआईसी एजेंसी और एलआईसी एजेंट्स के एजेंट्स लोगों को जो काम होता है वो काम के बारे में सोसाइटी में और कॉमन पीपल में जो मिसकंसेप्शन है, रॉन्ग आइडियाज है, रॉन्ग नोशंस है, उसका रूट क्या है, उसका जो जड़ क्या है, ये हम लोग देखेंगे। और व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस, वो मिसकंसेप्शंस क्या है, वो मिसकंसेप्शंस के कैसे डिबंक किया जाए, कैसे उसको ब्रेक किया जाए, ये देखेंगे। तो एट फर्स्ट वी विल हैव discussing here about four misconception. Number one misconception, what are the misconceptions? Then I will put it in writing before you in the whiteboard. Okay, just now I am going to write it over there. अभी मैं लिख कर दिखाता हूं कि वो जो मिसकंसेप्शन है वो क्या क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं ना? अगर देख पा रहे हैं तो वाई लिखिए। तो नंबर वन मिसकंसेप्शन अबाउट द एजेंसी, there are four number of misconception here I will discuss, but before that I have to make it clear that why it is useful to discuss about the misconceptions. देखिए बहुत सारे वो जो यंग पॉपुलेशन होते हैं ना वो अभी उसको काम नहीं मिलता, अनअपॉइंटेड रहता, अनएम्प्लॉयड रहता। लेकिन ये तो हम देख चुके हैं कि इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में वो जो यंग पॉपुलेशन का जो अट्रैक्शन वो उतना नहीं है। अगर आप एक यंग लड़का और लड़की को बताइए कि आपको इंश्योरेंस एजेंट होना चाहिए, तो वो पहले दफा वो सुनेगा और सुनेगी, लेकिन ऐसा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? व्हाई? इफ यू टेल सम यंग बॉय और लेडी about taking the insurance agency as a profession, why it is not so attractive for them? Because in society, even in their family, there are some misconception, wrong ideas, wrong notion. There was a network problem, a glitch. Now, again, I am showing this thing. Please be with me. नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। तो देखिए ये जो
चार मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी हैव टू discuss about the misconception. In general, whenever you approach an unemployed lady or gents person to become life insurance agent, he or she will not readily accept it. वो ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों? वो LIC एजेंसी के बारे में वो सोसाइटी में थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। और कैसे काम करता है ये काम का तरीका जो होता है, द मेथड ऑफ सेलिंग, अप्रोचिंग, एवरीथिंग इन society is not so much valued. Why it is so? Because there are so much misconception, wrong conception about insurance agency. Then what you have to do? What you have to do? देखिए, ये केवल नया नया जो एजेंसी लेने वाला है उसके लिए नहीं, जो लोग एजेंट हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो मिसकंसेप्शंस, इसको समझना पड़ेगा। दे हैव ऑल्सो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मिसकंसेप्शंस सो दैट दे मेक इट क्लियर विद इन his family or her family, even to himself or herself, and to the society, that all these are nothing but misconception, nothing but myth. What are the things? These are the things, misconceptions. These are only a few misconceptions, but there are other misconceptions also. So, after we are very clear about our about the misconception about the agency or about the working process, about the profession, then we will be very much motivated. We will love our job. We will love our agency to our best, and we can perform our best. We can be always motivated and focused if we have get rid of all these misconceptions. So let us now discuss about this misconception. Number one, actually, whether you are being able to see all this or not. क्या आप लोग देख पाते हैं? अगर नहीं देख पाते हैं, वो जो व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन किया, अगर नहीं देख पाते हैं तो आप लिखिए जरा। तो देखिए, ये जो पहले वाला, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर द मिसकंसेप्शंस। देखिए, नंबर वन मिसकंसेप्शन जो है वो है इंश्योरेंस। देखिए, इधर है, इंश्योरेंस एजेंट्स आर पुशी। आई मीन, इन द सोसाइटी there is a misconception that insurance agents are pushy salespeople. They are actually always the pushing type of people. So many people actually avoid them, as because they think that whenever I will come across any insurance agent, he will try, or she will try, the agent will try to push me any insurance product, or to try to force me to buy any insurance product. This is the first misconception. We will make it clear and debunk all these misconceptions. Number two misconception, their job will be replaced by online platforms. It is not only the misconception among the people of the society, but it is also a misconception or myth even among the agency force throughout the world. Whether the agency profession will exist in competition with the online platforms or not. Will agents be replaced by artificial intelligence, by online platforms? Will the people buy only from online platforms, or will the people also give value to the agents, human agents, and give and allow them to meet with them at their family, at their house? This is the concern. And there is a very, very high number of people
those think that this is the reality of future, that they think that online platform may replace the insurance human agents. एजेंसी का जो काम है, क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस हो जाएगा? क्या ऐसा होगा कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, वो जो आदमी, जो फैमिलीज जो इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदेंगे? क्या वो एजेंट्स को अलाउ करेंगे घर में आने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक मिसकंसेप्शन भी है. देखिए, नंबर 3 मिसकंसेप्शन, दैट इज, आई थिंक दैट यू आर very ease you are at very ease in understanding all these things, and I am actually using English and also mixed with Hindi. So I think that everything are being clear and everything are very transparent to know and understand all the four misconceptions. uh, till now we have told only two misconceptions, and the number 3 misconception is policy does not deliver value. What is the value? What is the value? Whenever we are hungry, we go to any restaurant और वो जो फूड वाला होटल होता है, मीन्स खाने वाला होटल. तो वो, अगर हम लोग हंग्री होते हैं, भूख लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं. तो रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? खाना मिलेगा. और रेस्टोरेंट का वैल्यू क्या होता है कि इफ आई एम hungry, if I am hungry, then the restaurant will provide me with food, and the owner of the restaurant or the restaurant itself will deliver a value which I require. What is the value? It is the solution of the problem. What is the problem? That is the hunger. वो जो मुझे वो वैल्यू देंगे कि मैं भूखा हूं, वो फूड देंगे, मेरा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम and can be solved by any other solution, then there may be a value. लेकिन वो बहुत सारे पीपल जो होता है, जनता, वो ये नहीं समझते कि LIC पॉलिसी कौन सा वैल्यू देते हैं. सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन, policies do not deliver value. Policy do not deliver value. This is a misconception. I have make you clear about three misconceptions or myths. Number 1, number 2, and number 3. Now I am going to tell about the number 4 misconception. What is this thing? This is nothing but agents earn by exploiting customers. It is a very, very powerful yet simple and also demotivating factor for the insurance agents. So many young girls and boys are demotivated due to this type of talking from their near and dear ones, from their neighbors, from the society. अगर आप ऐसे कोई बात सुने कि वो एजेंट जो होते हैं ना, अ, वो जो उसका जो खाना मिलता है, उसका जो इनकम मिलता है, वो कस्टमर्स लोगों को एक्सप्लॉइट करके ही मिलते हैं. हम लोग हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसको अर्निंग मिलता है एजेंट्स लोगों को. अगर ये सोच कोई भी एजेंट दिमाग में वो इसका बैठ जाए, आई मीन, इफ दिस थिंकिंग is deep rooted in any new agent's mind, he or she will definitely be demotivated. Yes, he or she will definitely be demotivated. These are the things, these are the 4 misconceptions or myths today. Actually, I am going to debunk. Please do not write anything in the chat box. Sorry, in the white box. Please do not do it, so that it remain clear. Okay. Then number 1 misconception was, as I told, that insurance agents are pushy. Number 2,
Their job will be replaced by online platforms. Number three, policies do not deliver value. Number four, agents earn by exploiting customers. Now let us discuss over all these misconceptions. I think that you are enjoying this training. If you are enjoying this training program, it is free of cost, yet it is very valuable. Please write if it is good, bad, poor, or even if you are clear about all these things I have told you, then please write C. If clear, then write only C. Okay. तो क्या क्या मिसकंसेप्शन रहते हैं वो सोसाइटी में, वो तो देख लिया। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू अ लिटिल मोर, लिटिल अबाउट द इम्पैक्ट on the new agents. Yes, impact of this misconception. Furthermore, I will discuss it uh, elaborately. Impact on new agents. If a new agent is not strong enough, so he or she will be feeling low confidence due to this societal bias. Yes, due to this societal bias. This is the thing that will make the new agents demotivated. At that time, what a team leader, what a mentor should do. A team leader or a mentor should make them use affirmation techniques and mindset exercises. And also, they have to discuss all these negative conceptions, wrong conceptions elaborately. And as for that purpose also, today's training class is also important. Number two, the negative impact on the new agents and even the existing agents who are working for more than 5 or more than 10 years, they may be very often be demotivated due to all these things. So, especially for the new agents, these wrong conception, wrong beliefs in the society will make a make an impact. I mean, very serious impact to the mind of the new agents and even to the weak agents. What is the second impact? That is the difficulty in developing personal brand. If my profession is not valued, whatever I do is not generating any value in the society. If I think so, even the societal people, if they think so, then it is very, very tough to develop any personal brand. ओ एक एजेंट, उसका वैल्यू क्या है? वो रहे या ना रहे, वो आए या ना आए मेरे घर में, तो उसमें मेरा क्या डिफरेंट होगा, फर्क होगा? अगर ये कोई आदमी सोचे तो उसके लिए एजेंट का जो ब्रांडिंग, एजेंट का जो नीड, जो रिक्वायरमेंट, वो तो तैयार नहीं होगा ना। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप पर्सनल ब्रांड in this case. In this case, the agents should take care of their brand. Agents, yes, new or old, every agent should take care of their personal brand. How to do it? If any person in the society, in the neighborhood, or even in the family or friendship are in the wrong belief about the value system of agency, then an agent should start with storytelling. Start with real life example. What an insurance policy can deliver the value. Why an insurance policy is very important for our family. And there should be some examples also, real life examples.
And if the value of the life insurance is established, if the value of the financial planning, financial management is established, if the value of the savings is established, then through storytelling, through citing some examples, then only you can change the mind of a customer or negative customer. And also, the agent should have belief on his profession or her profession, her own self, and he or she should authenticate self-expression in the client conversation by giving some proofs, some ideas, some uh, uh, stories, some examples, all these things. Then another problem, uh, if they are for the new agents, if there is those misconceptions prevails in the society, what will be the third problem? Number one problem is confidence level will be low. Number two problem is it is very difficult to establish or develop any personal brand. Number three problem, that is rejection will be more powerful, or facing rejections rooted in all those myths is very strong to win over. So what are the rejections maybe? If a person is not motivated to buy a policy, if the policy is not actually so much urgent or necessary for his or her family, then the objection is a set of another things. But if there is basic wrong conceptions, if there is deep rooted myths in the mind of the probable clients about the agents, about the agency, about the value system, if suppose हिंदी में ट्राई कर रहा हूं कि देखिए, अगर एक आदमी को इंश्योरेंस लेना नहीं होता तो वो क्या कहते कि इंश्योरेंस का रिटर्न अच्छा नहीं है, मेरे पास बहुत सारा इंश्योरेंस है, मैं लॉन्ग टर्म में नहीं जाऊंगा, ऐसा ऐसा। दैट मीन्स ऑल दिस जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, वो सब प्रोडक्ट के बारे में और यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में ही होता। लेकिन अगर उसके साथ एजेंट्स के बारे में भी उसके दिमाग में रॉन्ग कंसेप्शन रहते तो क्या होता? तो वो जो ऑब्जेक्शन वो ज्यादा पावरफुल हो जाता। अगर प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव सोचें, प्रोडक्ट के बारे में अननेसेसरी सोचें, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर एजेंट्स के बारे में, एजेंसी के बारे में, एजेंट जो काम करता है उसका काम करने का तरीका के बारे में अगर कोई आदमी मीन्स प्रोस्पेक्ट वो नेगेटिव सोच में रहते हैं पहले से ही, तो क्या होगा? रिजेक्शन बहुत ज्यादा आएगा और शुरू से ही आएगा, ऑन द एट द बिगिनिंग आएगा। यही प्रॉब्लम है। सो हाउ टू डू गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आई मीन रिजेक्शंस। देखिए, रिजेक्शंस तो हम लोग कैसे समझेंगे? रिजेक्शन मीन्स ऑब्जेक्शंस इफ इट इज, then you have to learn the objection handling technique. You have to know the actual answers whenever they ask you any important questions about the return, about the long term, about the relative lower return of insurance policy. Then you have to know how to answer all these things. But when they are mingled with the wrong meats, then you have to be much more cautious. So it is your duty to learn specific objection handling technique where you can answer all the questions of the customer, and also you can debunk the myths deep rooted in the mind of the client or probable client. So you have to train yourself or get training from any other platform, not only to handle the objection, but also to reframing
the mind of the client, to make their myths broken, to debunk all the wrong conception in their mind about the agency, about the value of policy, to be learned by you. Then I am going to the third section. At the first section, I have discussed about what are the misconceptions prevailing in the society. In the second section, I have told you what are the actual impact of these misconceptions on the new agents, especially on the new agents, and also on the weak type of existing but long-term agents. What will be the impact? And in the section 3, we will discuss about the challenges for the team leaders. Not only the agents are suffering from all these misconceptions, the team leaders are also suffering very much from these wrong conceptions. Yes, the team leaders are also suffering from this misconception. Are you enjoying that training? क्या आपको ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है? समझ में आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स्ड जो ट्रेनिंग कर रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप रेटिंग भी कर सकते हैं अब तक के लिए जितना हो चुका है. ई फॉर एक्सेलेंट, इफ आपको ज्यादा अच्छा लगता है. VG फॉर वेरी गुड. देन G फॉर गुड एंड P फॉर पुअर. अगर अच्छा नहीं लगता तो पुअर P लिखिए. अगर अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो गुड लिखिए. अगर उससे भी बढ़िया लग रहा है तो वेरी गुड लिखिए. अगर आपको एक्सेलेंट लग रहा है तो ई लिखिए. कुछ तो लिखना चाहिए, इसलिए कि हम लोग को भी समझ में आए कि देखिए, इसके बाद जो चैलेंजेस ऑफ द टीम लीडर, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए. उसके बाद क्या करूंगा मैं, लिखना नहीं चाहिए, डिबंक करूंगा. थोड़ा थोड़ा तो अभी से ही शुरू कर दिया हूं कि कैसे डिबंक किया जाए. ओके, तो बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेता हूं. एक मिनट. थैंक यू पूर्णिमा डीगर. Excellent. Motorola H50 Fusion. Good. Okay. Let us now discuss about the challenges a team leader or every team leader will face due to these wrong conceptions. 1 minute, please. Actually, I have to. Please do not write over there. Please do not write. 4. देखिए, ये जो 3 चैलेंजेस आएगा,
मेरा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, मेरा मदर टंग बंगाली है, इसलिए थोड़ा बहुत तो हिंदी का जो लिंक प्रॉब्लम होगा और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा. Challenges for the team leaders. Number one, myths stall team growth. Not only that, actually टीम ग्रोथ वो जो रुक जाएंगे मिस के कारण, वो तो होगा ही होगा. और भी एक प्रॉब्लम होता है, इधर लिखा नहीं है. क्या होता है कि जब भी कोई एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए कोई टीम लीडर जाते हैं, यही मिथ उसको वो प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं. तो एक तो रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम होगा, and the other, the myths will stall team growth. It will it will hinder, it will actually prevent the team to grow. So you have to discuss strategies to build agents identity and pride within the team. Whenever you as team leader will make any meeting program or training program for your agents, then please discuss about the agent's identity and the pride, not only within the team, but also they are proud of being a member of that life insurance industry. You have to do it. Number two, what are the second problem or challenge faced by the team leaders? That is need for coaching beyond sales. ये भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि देखिए, एक तो एजेंट वो एजेंसी में वो ज्वाइन किया, उसके बाद काम करना चाहिए. तो काम करने के लिए क्या चाहिए कि सेल्स के मार्केटिंग के बारे में उसको वो लर्निंग और टीचिंग देना पड़ेगा. वो तो वर्कशॉप में, मीटिंग में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता ही है. तो डीओ लोग, टीम लीडर्स, टीम मैनेजर्स, एलआईसी में जो सीएलआईएस होते हैं, और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी में जो टीम लीडर टीम मैनेजर्स होते हैं, वो लोग तो देते हैं. लेकिन केवल केवल सेल्स और मार्केटिंग का ट्रेनिंग और कोचिंग देने से ये जो मीथ्स वाला प्रॉब्लम, ये सॉल्व नहीं होगा. सो नीड फॉर कोचिंग बियॉन्ड सेल्स. Emotional mentorship, it is very important. It is very required. Whenever an agent is recruited to a team for a certain insurance company, they have to go out in the society for approaching, for selling, for presenting the concept of insurance. And whenever they are going out, they are actually they are actually coming across all these people who have wrong conceptions or myths, and then they become demotivated. Their mental enthusiasm or mental power slims. So at that juncture, the team leader should make some mentoring programs, that is emotional mentorship. Please do not write over there. I think that you are trying to copy it. You can make it a copy by screenshot. Don't worry, it will be done very easily. Then not only emotional mentorship is required, but also myth busting workshops, as like as today's program. Myth busting workshops are very required. And the third challenge, third problems by the team leaders, for the team leaders, is responsibility of re-educating clients and community. Not only teaching, not only coaching the agents or team, but also it is the duty of the team leaders to educate the clients and the community as a whole. If a team leader or a group of team leaders arrange some customer awareness program or any such program by which they can outreach the community, and by any method, that is physical method or digital method,
and they can educate or re-educate. Actually, they are wrongly educated. So they have some myths, wrong conceptions about the agency and the insurance industry as a whole. So it is their duty, not only the team leader, but also the managers, even for the insurance companies, their duty. IRDA is taking some part in educating the society or community about the importance of life insurance and also about the importance of agents. Furthermore, a team leader may do it locally by outreaching the community to make them educated, I mean re-educated about all these things. Now, my number 3 section is also done. Now we will go into the actual debunking process. देखिए, वो जो मिसकंसेप्शन जो पहले मैंने बोला, वो 4 मिसकंसेप्शन था। नंबर 1, इंश्योरेंस एजेंट्स आर पुशी। नंबर 2, वो जो कि एजेंट्स का जो काम वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस हो जाएगा। ये नंबर 2। नंबर 3 वाला जो, वो तो पॉलिसी के बारे में था, लेकिन नंबर 4 वाला जो था, एजेंट्स अर्न बाय एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर करके एजेंट्स लोग अर्निंग करते हैं। ये 3 जो रॉन्ग कंसेप्शन है, ये एजेंसी प्रोफेशन के बारे में है। और नंबर 3 जो था, पॉलिसीज डू नॉट डिलीवर वैल्यू, ये इनडायरेक्टली एजेंसी के बारे में था, लेकिन ये कंसेप्शन ऑफ इंश्योरेंस और पॉलिसीज के बारे में था। तो ये जो 3 जो रॉन्ग कंसेप्शन, एजेंट्स आर पुशी, एजेंट्स आर एक्चुअली नथिंग बट सेल्स पीपल, they only think of their commission. This is a very negative conception. But if any person from my family or from my society, from my neighborhood, tell me if I am an agent and tell me all these things, then I will become demotivated. Even I will start thinking that if the agency profession is good, is the agency profession is worthy for me? It will be the mental condition of agents. So all these 3 wrong conceptions should be debunked in the mind of the agents at first, then for the society and the people. So number 4 section for today's program, that is named as reframing the agent identity. What is the thing? Reframing the agent identity. Then I will make you clear about these things. Reframing the agent's identity. And I will write in the whiteboard, sorry. A new worksheet I'm taking. Actually, now I am in the process of debunking all these misconceptions. I think that you have made it clear about what the misconceptions I am actually talking about. देखिए, आप लोग तो अब तक ये समझ चुके हैं कि मैं जो 4 मिसकंसेप्शन के बारे में बोल रहा था, उसमें से 3 मिसकंसेप्शन एजेंट्स लोगों के प्रोफेशन के बारे में है, और एक जो पॉलिसी वैल्यू डिलीवर नहीं करते, वो वाला जो मिसकंसेप्शन था, वो इनडायरेक्टली एजेंसी प्रोफेशन के बारे में था, लेकिन एक्चुअली वो पॉलिसी, रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसी, नेसेसिटी ऑफ पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी के बारे में था, और इवन द कंसेप्शन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में था। तो देखिए, ये रिफ्रेमिंग द एजेंट्स आइडेंटिटी, आई मीन व्हाट इज आइडेंटिटी? दैट इज अ वेरी डीप रूटेड क्वेश्चन, even asked by so many saints, I mean Muni and rishis of India. Who I am, what is my duty, what value do I deliver to the society? If any single agent think about himself or herself
that who I am. I am a person. I am a young boy. I am a young lady. But who I am? I am insurance agent. This is the actual name, my profession's name, insurance agent. But if it is deep-rooted question, who I am, then there may be some another questions associated with this thing. Who I am means what value do I deliver to the society? Is actually insurance agent are required by the society? If I am not in the society, what will it harm to the society? अगर मैं नहीं रहता, एक भी एजेंट नहीं रहता, तो क्या सोसाइटी खत्म हो जाता? तो क्या वो फैमिलीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता? क्या वो सब लोग दुखी हो जाते? क्या सब लोगों को सेविंग्स नहीं होता? क्या उन लोगों का वो ओल्ड एज में प्रॉब्लम आ जाता? ये सब सोचना चाहिए। लेकिन वो तो सोसाइटी बोलते हैं कि एजेंट्स लोग का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्टली बोलते हैं। थोड़ा बहुत लोग तो बोलते हैं। तो इसीलिए एज एन इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट आप है, आप आप खुद के साथ खुद बात करना चाहिए। व्हाट इज माई आइडेंटिटी? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? एम आई ओनली द सेलर? एक्चुअली एम आई पुशी सेल्समैन और सेल्समैन? क्या मैं वो पुशिंग करता ही हूं, पुशिंग करके ही सेल करता हूं? मेरा और कोई वैल्यू नहीं है? देखिए, फ्रॉम प्रोडक्ट सेलर टू लाइफ आर्किटेक्ट, नो, you have to understand your value. You are not only the product seller, you are the life architect. You are actually shaping the future life of the family members of a family. You are actually shaping the future life of the family members of the family. In a family, in a standard family, there is a husband, there is a wife, and two or three children, even if one child, and maybe their aged father and mother, maybe dependent sister or brother. And uh, each and every one if of a family will not earn in a standard family. 1 or 2% of that family will earn money for the family. And what does insurance do? Insurance protects their income even after their death. अगर जो अर्निंग करने वाला जो आदमी और वो जो फीमेल मेंबर जो भी हो, वो अगर उसका अर्निंग स्टॉप हो जाए, डेथ आ जाए, एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो सोर्स ऑफ इनकम विल बी डिमोलिश्ड। नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? वो एक लामसम के रूप में आ सकते हैं, एक रेगुलर इनकम के रूप में आ सकता है। कहां से आ सकता है? एलआईसी से। तो फ्यूचर जो लाइफ होता है, तो वो किसका होता है? वो वो जो एक आदमी जो चला गया, वो तो छोड़ के गया उसका चिल्ड्रन को, उसका वाइफ को, उसका भी तो फ्यूचर था। वो फ्यूचर में जो भी ड्रीम है, जो भी फंड रिक्वायरमेंट है, वो सब कौन संभालेगा? एलआईसी पॉलिसी संभालेगा। सो एलआईसी पॉलिसी कहां से आया? अगर एजेंट एक फैमिली के अंदर घुसकर उनको ना प्रेजेंटेशन करते, ना उसका प्रॉब्लम, उसका जो प्रॉब्लम आते हैं, उसका जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो पॉलिसी तो नहीं खरीदते ना। इफ एन एजेंट do not enter to the family, if he or she do not try to make the good presentation, and do not try to make the people or the family owner or the decider to motivate them to buy the insurance policy, how they can buy?
if they spontaneously eager to buy the policy, if they would have been, then they may have been gone to the LIC or any insurance company offices. But in reality, a very few people actually go to life insurance offices and ask for insurance policy and they purchase. Very little, very little. Even after the online platform has been discovered or is very open to each and everyone, very few people are actually buying insurance policy from online platforms because the awareness of the requirement, the actual beneficial side of insurance policy is only discussed by the insurance agents towards to the head of the family or to the decider of that family. So whenever actually whenever you go for selling a policy, you are in disguise a life architect. You are actually doing a job of architect. You are doing a job of architect and making their future life arranged, financially protected, financially sound. So you are not only the product seller. Maybe in the views of the general people, for few people, you may be a pussy salesman or saleswoman, but actually you are the life architect. वो लोग सोच सकते हैं कि आप लोग पुसी सेल्समैन है, लेकिन एक्चुअली आप लाइफ आर्किटेक्ट हैं. ये जो बात मैंने बोला अभी, अगर आप इसमें सहमत हो, इफ यू आर agreed with my views, please write why in the chat box. Number 2, craft a compelling professional narrative. What is this thing? At first, to make your identity pronounced, to make your identity swayable, to make your identity boost up, number one, you have to think that you are not only the seller of the product, but also a life architect. And you have to do all these things in reality also. And number two, you have to create a compelling professional narrative, an elevator speech, an affirmation that redefine your role. I mean, you have to think who I am, and you have to remind yourself about your role. Number 3, build client relationship on trust, not transactions. देखिए, क्लाइंट लोग के दिमाग में जो रॉन्ग कंसेप्शन है, अगर उसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको सेल्समैन से निकलकर एक फ्रेंड, एक गाइड के तरह उनके पास जाना होगा. सो दे आर रिक्वायर making relationship and building trust among the people about on yourself and on you and your insurance company. And it will be done by showcasing long-term service examples, and also at present your branding may be created by educating the customer in different online platforms. So this is the number 4 section. Actually, that time is very short, and now uh, there is only 15 minutes in my hand for today's class, and I will discuss all these things by these 15 minutes. तो देखिए, ये जो 4 मिसकंसेप्शन है, एक तो है इंश्योरेंस एजेंट्स आर पुशी, नंबर 2 है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल रिप्लेस द एजेंट्स, नंबर 3 है पॉलिसी डू नॉट डिलीवर वैल्यू, नंबर 4 है एजेंट्स अर्न बाय एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर. वो जो मिसकंसेप्शन है 4, उसको फिर से मैं लाता हूं और एक एक करके डिबंक स्टार्ट किया है. अभी डिबंक करने के लिए बोलना शुरू किया, फिर भी
मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर देंगे। This program is being organized by Jeevan Prabaha Training Center. Sorry. And you know that Jeevan Prabaha Training Center is, 1 minute, please. Working for life insurance agents, especially LIC agents, for last 17 years, the training center in offline, and the magazine Jeevan Pravaho is performing for 22 years, and I am in insurance industry for 31 years. So I am very much familiar to you. Actually, you are very much familiar to me, and I know different type of agents who are successful, even who are lower successful, who even are very demotivated, who are very motivated. So I think that you will be getting something positive from this training program. If you are getting something from this program, please write in the chat box. You have actually two of you has put your remark, no, no other than this 2%. Please write about how you are feeling. Okay. देखिए, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ना, ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कर रहा हूँ, तो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो होगा, मदर टंग नहीं है इंग्लिश, बट हिंदी तो थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। थोड़ा 1 मिनट मुझे दीजिए। आफ्टर 1 मिनट आई विल कम बैक, जस्ट 1 मिनट। आप लोग ये तो जानते हैं कि मैं जो ट्रेनिंग करता था वो 90% बंगाली लैंग्वेज में करता था। लेकिन जब मैं अलग स्टेट में जाता हूं तो थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। फिर ऑनलाइन में अभी शुरू कर दूंगा कि अ, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का different courses, and it will be very very low cost. 3 training classes on prospecting course. If it is in Bengali, then it will cost not less than 499 into 3 equal to लगभग 1500 रुपया। ये तो लग ही जाएगा। एक्चुअली इसमें भी नहीं होगा, इसलिए कि बंगाली में जब हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका मिनिमम रेट रहता है 1999 रुपीज। वो 3 क्लास भी नहीं होता, 4 क्लास होता, ये 4 हो जाता। ओके, ये बंगाली में। लेकिन यही कोर्स अगर आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स्ड करके ये जो मैं स्टार्ट करूंगा, ये इनिशियल स्टेज में होगा, इसीलिए इसमें 3 क्लास होगा। You cannot believe how lower the cost may be. Only 199 rupees for the entire course, 3 class course. Yes, it will be.
And if you want to get the video recording also, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो अलग से 199 रुपीज देना पड़ेगा. I mean 3 live class will be at only rupees 199 and 3 recording class recording only rupees 199 for 3, not for 1. So 200 रुपए में आप 3 क्लास पाएंगे. फिर 3 क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको लेना चाहते हैं तो और 200 रुपया. अगर आप चाहते हैं कि इसको ज्वाइन करें तो आप कर सकते हैं. मेरे साथ फोन कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर में 9735869416. ऐसे ही करके एक एक कोर्स चालू होगा. तो ये पहले वाला कोर्स है, इसलिए इनिशियल स्टार्टिंग कोर्स हो इतना लो कॉस्ट है. अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. देखिए, ये जो 4 misconception or wrong conception about the insurance agency and about the insurance policy or insurance industry as a whole, I will break it right now from the beginning, point by point. Number 1, insurance agents are pushy. I will ask you a question. Do you think, as an insurance agent or insurance leader, do you think that insurance agents are pushy salesmen? Or do you think that insurance agents are not pushy? What do you think? If you think pushy, I am not telling about you. I am telling as a whole, total the force of insurance agents. What do you think about those people? Are they pushy or not? I will ask you a parallel question. Do you think that politicians are corrupted? Do you think politicians are manipulative? What do you think? It is your opinion. So, likewise, I will ask you, what do you think? Insurance agents are pushy or not pushy? Please write your answer in the chat box and I will continue with this discussion. देखिए, अगर आपको ये मैं पूछूं कि आपका राय क्या है, आप क्या सोचते हैं कि केवल आपके बारे में नहीं, टोटल इंश्योरेंस एजेंट्स फोर्स के बारे में, क्या इंश्योरेंस एजेंट सर पूछी? क्या इंश्योरेंस एजेंट जबरदस्ती से सेल करते हैं, पुश करते हैं, फोर्स करते हैं? लगभग ऐसे ही होता है. लगभग ऐसे ही होता है. आई डू नॉट think that they are pushing, but customer think that they are pushing, because whenever you are going to make a good presentation, most of the agents do not prepare for a good presentation. Most of the agents think only of their commission. So most of the agents actually try to sell the policy by any cost. And so in society, this is a wrong conception has been created in the society. But in reality, for a good insurance agent, for a लगभग जो अच्छा इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो लोग तो पुशी नहीं होते हैं. सो वी कैन नॉट ब्लेम द प्रोफेशन ऑफ एजेंसी एज पुशी, बट as because most or majority of the agents are doing so in the society, so the people's conception about the agents has been generalized as the insurance agents are pushy. So do not think about the generalization. Think about yourself. Are you pushy? Are you pushy? If you think that you are not pushy, then it is right. Because if you follow the right path, if you focus on the customer's need,
if you suggest the good insurance concepts and insurance schemes for the benefit of the policyholders or for the prospects, then you are not pushing. Actually, the job itself is not pushing. The method, the real life methods adapted by different majority of agents are likely to be pushed. So, for your case, you do not think that I am a pussy salesman. And you have to make this clear to your probable clients, to your society, to your locality that there are different type of agents. And as for myself, as every professional are not the same, every shopkeepers are not the same, every students are not of same type, every people are not same type, so every agent are not same type. Insurance agents may be pushy in your view, in your real life bitter experience, but I am not such a pushy person. So you have to establish your identity as not only insurance agent but also as insurance advisor, as a good family friend, as a financial planner, as a wealth manager. And this is your duty. At first, you have to reaffirm yourself that I am not pushy. I will adopt all these things so that the agent, the customer do not think that I am pushy. Then number two, the job to be replaced by online platforms. देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत ही बोलूंगा आज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एजेंसी का जॉब्स जो होता है, उसका जो साइड जॉब्स होते हैं ना, वो रिप्लेस जरूर होगा, जरूर होगा, लेकिन वो जो कोर जॉब, एक एक एजेंट का जो कोर ड्यूटीज है, वो रिप्लेस नहीं होगा। व्हाट इज द कोर जॉब? देखिए, ये जो एक आदमी के साथ एक आदमी का, एक एजेंट के साथ एक क्लाइंट का जो रिलेशन, वो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकते। ये जो फेस टू फेस मुलाकात जो होता है, वो फेस टू फेस निगोशिएशन, परसुएशन, डिस्कशन, हेल्पिंग, नोइंग द कस्टमर्स इमोशंस, ये सब तो ऑनलाइन में नहीं होगा। सो whenever you are actually guiding the person to choose the actual insurance scheme or actual insurance conception, then only human being are required. No human being will be replaced by the online or robotic or any other digital platforms. So emotional intelligence has a role, and human beings are so much naturally intelligent emotionally that it cannot be replaced by online platforms. And human connection is the basic ground for जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जो LIC का स्लोगन है ना, ये क्या है? ये तो एक आदमी का जीवन के बारे में होता है ना, लाइफ, डेथ, इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स, ये सब ह्यूमन कनेक्शन वाला चीज है, तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और एक बात, पॉलिसीज डू नॉट डिलीवर वैल्यू। देखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बोल चुका हूं कि पॉलिसी कैसे वैल्यू डिलीवर करता है। तो पॉलिसी का वैल्यू क्या है वो थोड़ा बहुत बोल चुका हूं इसी क्लास में। एक बार फिर याद करके देखिए। तो पॉलिसी तो वैल्यू डिलीवर करता है, इसलिए कि अगर इफ अ पर्सन require monetary support after his death, after his accident, in the old age, in even in his presence or her presence, if he or she require a good lump sum amount, then how can he or she make this good lump sum amount in a very protected insurance, in a very protected organization with a guided idea? And this guidance, this protection, this safeguarding, these conceptions, this planning is the matter of value. So in a real world, whenever any family gets the claim settled, their story will